बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुबत शाह हियर। आज का जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट Lagrange's इंटरपोलेशन। Lagrange's इंटरपोलेशन के बारे में हमने डिस्कशन करनी है कि इसको हम कैसे करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर एंड बाय यूजिंग Matlab programming. You should note that Lagrange's interpolation can be used for unequally spaced and equally spaced data both. So let's suppose we have n plus 1 points, right, for a function y is equal to f of x or y of x, such that for x naught y is y naught, for x1 y is y1, x0 x1 x sorry should be x2 and x n y n. ये हमारे पास जो points हैं ये सारे क्या हैं, they might be equally spaced or unequally spaced. Okay, so in this case our aim is to find a polynomial of degree n ln x such that it fits this data, that is ln xi is equal to y of xi which is equal to yi. मतलब इसका ये है कि अगर हम x की जगह x नॉट पुट करें तो हमारे पास x y नॉट आना चाहिए। अगर हम x की जगह xi की जगह x1 पुट करेंगे तो हमारे पास y1 आएगा। दिस इज़ x2। अगर x2 हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये y2 आएगा। तो हमें कैसा पॉलिनॉमियल चाहिए जो कि इस डाटा को फिट करेगा। तो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी न्यूटन फॉरवर्ड पे और न्यूटन बैकवर्ड पे, तो उसमें इक्वली स्पेस्ड होता है और तब भी हमने वही फिटिंग की बात की थी। यहाँ पर जो x0 x1 x2 अप टू xn होंगे they might be unequally spaced as well. Okay, so how does it work in case of linear interpolation? If we have given 2 points x0 y0 and x1 y1, then the polynomial will be obviously linear. Polynomial will be of degree 1, so that is x minus x1 by x0 minus x1 y0 plus x minus x0 and divided by x1 minus x0 y1. So you see that if you put x equal to x0, what would happen? So that will simply give you 1 because x0 minus x1 will cancel either, and in here x0 minus x0 will give you 0, so that will give you simply y0. And if you put y is equal to x is equal to x1, in that case these two will cancel, we get y1 and that will give you 0. It can be proved easily because the steps are we do what? We just take a polynomial, or maybe we take simply a function y of x, like we say there is a polynomial of degree 1, so we take one coefficient to be a naught, so a naught that is into x minus x naught. Okay, and we need to use the second point as well, so that is coefficient will be a1, which is x minus x1, where these coefficients a naught a1 needs to be determined, and they could be determined by what? We need to find these coefficients a naught and a1 such that y is equal to y naught, so it will be it must fit the data. तो अगर हम y x की जगह x नॉट पुट करेंगे, if you put x is equal to x naught, so in that case y must be y naught. We know that it's given कि अगर x हमारे पास x naught है तो y की वैल्यू क्या होगी? वो y naught होगी। अब ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो we get y naught equals a naught into 0, because you see this will give you 0 when you put x equal to x naught, so this term is 0, so a naught multiplied by 0 plus a1 into, you see we put x equal to x naught, so that would give you simply x naught minus x1. Okay, and from here we can find the value of a1, so a1 is
that is 1 over x naught minus x1 into y naught. Similarly, if you put x equal to x1, right, we'll be having y is equal to y1. And again putting these values in the same equation, this one, that give you y1 equals y1 is equal to a naught into x1 minus x naught, and the next term will be 0 because that is x1 minus x1, so a1 into 0. That will give you 0. So from here we get a naught, so a naught is equal to 1 divided by x1 minus x naught into y1. Now if you put the values of a naught and a1 from here in this equation, you see, if you call this equation number 1 or whatever, we will get exactly this formula. That's the way to prove it. Whereas in case of a polynomial of degree 2, or as a quadratic polynomial, so what do? We will consider that polynomial of in the form of something like that. V of y of x is equal to, we'll be taking what? Simple y is equal to, you'll be taking again a naught and missing the first term, x minus x1 into x minus x2, okay, plus the second term could be a1 into x minus x naught now, और हमने क्या करना है, x माइनस x1 को छोड़ना है, दूसरा टर्म हमने लेना है x माइनस x2, और फिर इसके बाद हमने लेना है प्लस a3, and then we have a2, sorry, not a3, it doesn't matter, and this will be x minus x naught into x minus x1. अब इसमें x माइनस x2 नहीं होगा, तो अब देख सकते हैं सीक्वेंस यही है कि यहाँ पे हमने x माइनस एक्स नॉट को छोड़ दिया है, और रीज़न ये है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, दो फैक्टर लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमें दो लीनियर फैक्टर्स ही चाहिए होंगे, तो इस केस में हम x माइनस x1 को मिस कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, और यहाँ पे भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल चाहिए, तो इधर भी हमने x माइनस x2 को मिस कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में हमने x माइनस एक्स नॉट को छोड़ दिया, सेकंड में फिर हमने x माइनस x1 को छोड़ दिया, थर्ड में हमने x माइनस x2 को छोड़ दिया। बाकी अब प्रोसीजर सेम है, पहले हम x की जगह x1 पुट करेंगे, y की जगह y1 पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास a नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप पुट करें x इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड द करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू वाई नॉट, तो इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ वाई नॉट ए नॉट आ जाएगा। इससे हमने पिछले इसमें किया था इन केस ऑफ 2 पॉइंट्स, तो यहाँ से हमारे पास a नॉट की वैल्यू आ जाएगी। फिर जब हम x की जगह x1 लेंगे और करस्पॉन्डिंग y की जगह y1 लेंगे, तो उस केस में हमारे पास y1 की वैल्यू a1 की वैल्यू आ जाएगी। एंड देन लास्टली वी विल बी पुटिंग x इक्वल टू x2, y इज इक्वल टू y2, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ a2 देन। और फिर ये सारे वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो L2 है, इट्स अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 विच विल बी फिटिंग द गिवन डाटा एंड सो ऑन। अगर हम फिर डिग्री 3 का करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तीन फैक्टर्स लेने हैं, लीनियर फैक्टर्स, a नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 एंड देन x माइनस x3 यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे होगा x माइनस x नॉट, x माइनस x1 मिसिंग होगा, x माइनस x2 इंटू x माइनस x3, यहाँ पे टर्म्स जो होंगे वो 4 हो जाएंगे और डिग्री जो होगी उसकी 3 होगी। और फिर अगेन वही चीज़, आप x की जगह x नॉट पुट करेंगे, y की जगह y नॉट, तो आपके पास a नॉट की वैल्यू आएगी, x1 y1 के लिए a2 की a1 की वैल्यू आएगी एंड सो ऑन। So that will basically lead you to the interpolation, Lagrange's interpolation formula. So in general case of degree n, we will be having like if there are n plus 1 points,
तो इसको हम इस फॉर्म में फिर लिख सकते हैं, दैट इज़ अ सम, बिकॉज इसी पिछले स्लाइड में हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे थे वो 3 थे, तो डिग्री उसकी 2 आ रही थी, और उसमें हम प्रोडक्ट ले रहे थे टर्म्स का, और फिर नीचे वही चीज़, इससे कुछ टर्म ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक एक टर्म हर एक में मिस हो रहा है। जब आई को हम 0 लेंगे तो पहले टर्म में x माइनस एक्स नॉट मिस हो जाएगा, जब आई को 1 लेंगे तो x माइनस एक्स 1 मिस हो जाएगा, एंड सो ऑन। जिसमें ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या हैं, दे आर डिफाइंड in the following way. See, the first product term is what? That is the x minus x naught. सारे के सारे terms यहाँ पे आ रहे हैं, all n plus 1 factors. There will be n plus 1 factors obviously because we are having this one. जबकि इसकी जो डेरिवेटिव है, ये जो सिंबल है पाई डैश n प्लस 1 xi, इसका मतलब यह है कि आपने इसी की डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर आपने x की जगह x1 या x की जगह x2 पुट करना है। तो अगर हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, दूसरे में ये ख़त्म हो जाएगा, तीसरे में और ख़त्म होगा, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, और फिर x की जगह x1 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिनोमिनेटर आ जाएगा, और x माइनस एक्स नॉट पहले केस में कैंसिल होगा जब फर्स्ट टर्म लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट में x माइनस एक्स नॉट तो आएगा, लेकिन x माइनस एक्स 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, तो इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज स्पेसिफिकली हम वही जो पिछला हमने कर दिया, अगर डिग्री 3 का है तो 3 फैक्टर्स आप लेंगे, डिग्री 4 का है तो आपने 4 फैक्टर्स लेने, और 5 टर्म्स आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो दिस इज़ नोन एज Lagrange's इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, और ये डायरेक्ट इंटरपोलेशन है। इसमें हमें x की वैल्यू जब दी होगी और y को फाइंड करना हो तो हमें इसको फाइंड करना होता है। एक हमारे पास फिर इन्वर्स इंटरपोलेशन है जिसमें हमें y गिवन होता है और हमें x फाइंड करना होता है, तो इसमें सिर्फ x और y का रोल चेंज करना है। वेयर एवर वी हैड x इन Lagrange इंटरपोलेशन, यू हैव टू रिप्लेस दैट विद y, एंड जहाँ पे y था उसको हमने रिप्लेस करना है x के साथ। बाकी वही सेम कंसेप्ट है जो हमने डायरेक्ट में कर दिया। Okay, so let's do an example for it. Let's suppose we are given some data for a function f of x equal to log of x to the base 10. Okay, so then we are given 300. This is a log value which is 2.4771, 304 2.4829, 305 and 307, and we need to find the value of this function when x is equal to 301 to the base log 10. Okay, ये हमें चाहिए। ध्यान में रख लें कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो 301 होगी, नॉट log ऑफ 301। कीपिंग इन माइंड, बाज़ स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं, वो इसको एज ए होल x लेते हैं। एज ए होल ये x नहीं है, x सिर्फ इसमें 301 ही होगा। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हमारे पास आते हैं ये सिंपल वही फार्मूला है। इफ़ यू कॉल दिस वन एज x नॉट, दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, दिस इज़ x3 एंड दिस इज़ x। तो हमारे पास इक्वेशन फार्मूला क्या है, x माइनस x1 पहले, तो वी हैव टू टेक 301। अगर मैं इसको करना चाहूँ तो फार्मूला अगर आपको आपके जहन में है तो ये x माइनस x1 है, तो बेसिकली दैट मीन्स x विच इज़ 301 minus x1. If you call this is my x naught, this is my y naught, this is my x1, ये मेरे पास y1 होगा, ये x2 है, ये मेरे पास y2 है, ये x3 होगा, ये मेरे पास y3 होगा, और ये जो 301 है ये मेरे पास क्या होगा, ये x होगा। तो इफ़ यू सी फ्रॉम द फार्मूला वी हैड x माइनस x1 पहले टर्म में, तो x माइनस x1 मीन्स कि आपने 301 से किसको सेपरेट करना है, x1 को, विच इज़ 304। फिर बी टेकिंग 301 माइनस 304 मल्टीप्लाइड बाई अगेन x माइनस दैट थिंग, so 301 minus x2, so x2 is what, that is 305, okay, which is obviously minus 4, and then the next term will be x minus x is 301 again, so 301 minus this one which is x3, 307, okay, and then in the denominator we are having what, that is x naught minus x1, so 300 minus 304, okay, this is x naught minus x1, so x naught is 300, okay, and x1 is what, that is 304. So we take 300 minus 304, then we have 300 minus 305, then we have 300 minus
307, और ये वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो साथ में है दिस विल बी और वाई नॉट। फिर इस तरह से हमने चेंज करना है, अकॉर्डिंगली आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट नाउ x माइनस एक्स टू, x minus x3, and then we have x1 minus x naught, x1 minus x2 and x1 minus x3, and ये y naught हो जाएगा, y1 हो जाएगा, and so on। फिर इस तरह से y2 के लिए हो जाएगा, फिर इस तरह से y3 के लिए हो जाएगा। अच्छा, अब ये सब हम कैलकुलेटर से कैसे करेंगे? डायरेक्टली अगर हम करना चाहें तो ये 1 by 1 वैल्यूज पुट करना और फिर उनको सिंप्लीफाई करना, उनको मल्टीप्लाई करना, इट बिट ट्रिकी एंड lengthy as well. So how do we do that? By using calculator. Before I use calculator, what do we do? हमारे पास जो x है इसको I will be labeling this one as x. Okay, this is my x. That will be fixed obviously. ये जो वैल्यू है जब मैं फर्स्ट टर्म को मैं फाइंड करूँगा, I will be doing that term by term. So I will be finding first this term. Okay, so I may call this one as a. Okay, I would call this as my b, this is my c, this is my d, right? अच्छा, और ये मेरे पास x हो जाएगा। whereas इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं y कंसीडर करूँगा। ये मेरे पास y होगा, जब मैं इसको फाइंड करूँगा तो फिर मैं इसको y कहूँगा, एंड सो ऑन। ये थोड़े से स्वैप होते रहेंगे, बिकॉज आई विल बी फाइंडिंग वन टर्म एट अ मोमेंट। इन सब को भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये फिर बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, इसमें फिर आपको बहुत से वेरिएबल्स चाहिए होते हैं और वहाँ पे कैलकुलेटर की इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती। तो इसलिए हम ये क्या करेंगे कि हम पहले इस टर्म को फाइंड करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंगली जब सेकंड स्टेप में हम आएंगे तो उस केस में हमने इन वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना होता है, ठीक है ना। जब मैं सेकंड टर्म में आऊँगा तो सेकंड टर्म में जो सब्ट्रैक्शन होती है वो नीचे वो x2 के साथ होती है या x1 के साथ होती है। तो हम इसको जिससे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम a कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास फिर a हो जाएगा और ये हमारे पास b हो जाएगा। ओके, और अकॉर्डिंगली फिर ये y की वैल्यू हम देंगे। लेट मी डू दैट एंड देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। Okay, let me use calculator. Again, first of all, you should have calculator mode in math mode. वो आपको पता है, अगर नहीं पता तो सिंपली आप सेटअप में जाएंगे एंड देन यू वुड प्रेस 1 हियर, जिसमें आपके पास ये मैथ मोड में आ जाएगा, जहाँ पर मैथ्स लिखा होगा। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास x जो है वो 301 होगा, मेरे पास जो a है इसको a कहेंगे, इसको मैं y कहूँगा, इसको मैं b c d अकॉर्डिंगली मैं कहूँगा। इनके वैल्यू पे चेंज होते जाएंगे जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू, आई सिंपल टेक दिस प्रोडक्ट, दिस क्वोशंट, ताकि मेरे पास डायरेक्ट डिवीजन फॉर्म में आ जाए और वो लंबा चौड़ा ना हो। ओके, सो वी डू इन न्यूमरेटर फर्स्ट, सो इट इज़ अ ब्रैकेट और x माइनस x1 है, जहन में रख लें। तो यहाँ पर हम लेंगे x माइनस a, दिस इज़ माई a, this is my b, this is my c, this is my d, keeping in mind कि मेरे पास जो a होगा वो क्या होगा, वो x नॉट होगा, b जो है वो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे चलो थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, अगर मेरे पास है तो आई विल बी टेकिंग x नॉट is my a, okay, x1 is my b for the first case, is my b, then I'll go for x2 is my c, and x3 is my d। ओके, और लास्ट जो y की वैल्यू है इसको मैं y लूँगा फर्स्ट टर्म के लिए, फिर इसको मैं y लूँगा सेकंड टर्म के लिए, फिर इसको मैं y लूँगा थर्ड टर्म के लिए, फिर इसको मैं y लूँगा फोर्थ टर्म के लिए। सो इफ़ यू हैव दिस इनपुट्स हेयर, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। तो पहले टर्म में क्या होता है हमारे पास, दिस इज x माइनस x1, सो इट मीन्स आई विल बी सिंपली टेकिंग x, जिसको मैंने x कहा हुआ है, ओके, दैट इज x, एंड देन माइनस आई एम टेकिंग व्हाट, x माइनस b। जहन में रखें पहले टर्म में x नॉट नहीं होगा तो इसमें मैं b लूँगा, ठीक है। सो x माइनस b, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, इट शुड बी b, b is here, okay, and then I close the bracket, then again starting another bracket, and then I'll be going for x again, x minus the next term will be taken as x minus x2, तो उसको हम c कह देते हैं, हमने इसको c कहा हुआ है,
तो इसमें आप c लिख लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करें, अगेन स्टार्टिंग द ब्रैकेट, एंड देन वी हैव x minus d, okay, this is my t, and then I just simply close the bracket, and then I'll come to the denominator, okay. उसमें मेरे पास अब क्या है, अब जनरल नीचे जो होता है वो x नॉट माइनस x1 होगा, x नॉट माइनस x2 होगा, x नॉट माइनस x3 होगा. सो मैं क्या करूँगा, अगेन आई विल स्टार्ट इन ब्रैकेट एंड देन आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम a now. I'll be taking a because x1 is my, x naught is my a, so a minus x1 which is b, so I'll be simply taking a minus b. I'll close the bracket, then a minus c, a minus c, okay, and then close the bracket, and then I'll take again, open the bracket with a माइनस डी. जहन में रख लें यहाँ पे जो a मैं यूज़ कर रहा हूँ, a मेरे पास अभी x नॉट है, लेकिन इसका रोल जो है वो साथ साथ चेंज होता जाएगा. अब इस ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ और साथ में मैं ले आता हूँ मल्टीप्लिकेशन में y, ठीक है, बिकॉज y की पर हमने ये वैल्यू देनी है फर्स्ट टर्म के लिए. सो आई बी सिंपली गोइंग फॉर द टर्म y. अच्छा, अब जब इसको मैं कैल्क से करूँगा तो ये मुझसे ये सारे वैल्यूज़ मांगेगा और मैं अकॉर्डिंग टू वो वैल्यूज़ उसको दूंगा. जो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए. सी, अब ये मुझसे x मांग रहा है. x मैंने किसको कहा था, x मैंने 301 को कहा था, तो आई बी गिविंग इट 301. इट्स माय 301. ओके. अच्छा, अब b मुझसे मार रहा है, b बेसिकली क्या है, x1 है, तो x1 यहाँ पर 304 है, तो आई बी गिविंग इट 304. थोड़ा सा अपने वैल्यू को जहन में रखना है कि आपने कौन सी वैल्यू लेनी है. अब c जो है ये हमने x2 को कहा हुआ है, ओके. तो अब क्या देंगे, मैंने c को वैल्यू कौन सी देनी है, x2 की वैल्यू देनी. x2 मेरे पास 305 है, सो आई विल बी गिविंग 305 नाउ. फिर ये मुझे d मांगेगा, d मेरे पास x3 है, x3 मेरे पास यहाँ पे 307 है, दैट इज 307. अब इसको मैं इक्वल प्रेस करूँगा. अब ये मुझसे a मांगेगा, a जिसको हमने x नॉट कहा हुआ है, a यहाँ पे 300 है, सो आई विल बी सिंपली टेकिंग 300. okay, and equal press करेंगे. now it will ask for y, and what is value of y for me in this case, that is 2.4771, 2.477 and then 1. okay, now if I press equal, it will give me the first value which is 1.2739. You can just go for the short terms as well, or maybe truncated values. With 1.2739 it gives you the first term. Now you don't need to change anything in this case, you just change the values. Now you see what would happen, आपके पास ये वैल्यू सिर्फ चेंज होंगे. ये आप b कह दें, इसको आप a कह देंगे, और इसको c और इसको d as it is. y अब यहाँ पर चेंज होगा, y की जगह आपने ये वैल्यू लगानी है. अब ये सिर्फ आपने थोड़ा सा चेंज करना है. तो अगर मैं इसको दोबारा इक्वल प्रेस करूँगा तो ये अगेन मुझसे कौन सी वैल्यू मांगेगा, ये मुझसे अब b मांगेगा. तो b को अब मैं ये वैल्यू नहीं दूंगा, अब b को मैं ये वैल्यू दूंगा, ये वैल्यू मैं a को दूंगा. इसी मैं क्या करने वाला हूँ, अगेन इक्वल. तो ये मुझसे पहले x तो फिक्स है 301, दैट्स ओके, इसको दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अब ये मुझसे b मांग रहे थे. पिछले केस से मैंने इसको b कहा था, लेकिन अब मेरे पास ये b नहीं, ये a है. ये वो x नॉट है जो कि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं. इन्हें पे मैं x1 की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो x1 अब a बन जाएगा और ये हमारे पास b बन जाएगा. ये इतना आपको जहन में रखना होता है. आप ये चेंज भी कर सकते हैं साथ साथ में. तो b को अब मैं 304 नहीं दूंगा, b को मैं अब 300 दूंगा. राइट, दिस इज इक्वल. अब c को मैं वही, ठीक है, वो आपने जो पहले दिया हुआ है 305 ही है, तो 305 ही रहेगा. d जो है वो 307 है, तो वो 307 ही रहेगा. ओके. इसके बाद अभी आपसे a मांगेगा, तो अब a आपका 300 नहीं है, ये अब वो 304 होगा. ओके, इक्वल. अब इसके बाद आपसे y मांगेगा. अब y की वैल्यू आपने ये नहीं, अभी आपने ये देनी है, विच इज़ 2.4829, 2.48 and then we have 29. Now if you press equal button, that will give you the next value, which is 4.9658. right, and then we go for equal sign. Then again we press equal sign, x is same again 301. okay, and then we press equal. now अब तीसरे स्टेप में क्या होगा,
अब ये आपके पास वही x0 है, ये आपके पास x1 है, ये अब a हो जाएगा। ए की जगह आपने 305 देना है, बाकी आप इसको b कह दें, इसको c कह दें, इसको जो भी कहते हैं अकॉर्डिंगली आपको कर सकते हैं, जो भी ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब b मांग रहा है तो अब b हमने 300 देना है, दैट्स ओके। अब c को चेंज करेंगे, c अब तो आपने 305 नहीं कहना, 304 को आपने c कहना है, तो जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ 304, इक्वल प्रेस किया। अब d आपके पास वही सेम 307 ही होगा, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हम ये वाला सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो 304 में इक्वल प्रेस करेंगे। अब a को हमने क्या कहना है, 304 नहीं, a अब हमारे पास 305 होगा। ये थोड़ा सा ऑब्वियसली ट्रिकी है, लेकिन इट्स सिंपल, वंस यू प्रैक्टिस दैट तो कोई आपको मसला नहीं आएगा। अब y की वैल्यू ये नहीं होगी, आपने ये लेना है 2.4843, 2.48 and then we have 43. Okay, and then we can simply press equal button, so it will be asking for something minus 4.4717, and the same thing for the next term। उस केस में हमारे पास ये आपने a को देना है, ये b को देना है, ये c को देना है, ये अब a नहीं होगा, ये b होगा, ये c होगा, ये d होगा, और इसको आपने a कहना है, और ये आपने y लेना है, राइट। सो आई होप यू कैन डू दैट योरसेल्फ एज वेल। नेक्स्ट स्टेप, तो आपने ये फार्मूला अब नहीं चेंज करना, आपने सिर्फ ये वैल्यूज़ को चेंज करना है, और आपके पास डायरेक्ट ये वैल्यू आएंगे। एट द एंड यू कैन सिंपल ऐड दीज नंबर्स, दीज वैल्यूज विच विल गिव यू 2.4786। ओके, आई होप ये सबको क्लियर है। सो लेट मी proceed now with the rest of the presentation. Let me get rid of this now as well, because it's just for explanation. Right, so it is done now, 2.4786 is the value. If you go to the next example, we can do that example as well, which is obviously, you see, in this case we'll be using some inverse one, because for x equal to 1 y is 4, for x equal to 3 y is 12, for x equal to 4 y is 19. What would be the value of x if y is 7? So in this case we can use the inverse formula, it's an inverse interpolation. So I hope it's the same thing. यहाँ पे आपने y और x की वैल्यू को इंटरचेंज करना है, यहाँ पर x की वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर y की वैल्यू आएंगी, बाकी वही सेम फार्मूला है। ओके, so it's simple. Again, you can practice with calculator just to have some experience for it. अच्छा, इसमें sometimes you may be asked, you see in this case, you find the Lagrange interpolating polynomial of degree 2 approximating the function y is equal to log of x, which is defined this, and hence then determine the value of log of 2.7. तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, हमें पॉलिनॉमियल चाहिए होता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म होता है इसका। ओके, डिग्री 2 का होगा तो हमारे पास 3 टर्म्स इसमें आएंगे। पहले टर्म में क्या होगा, इसको हम निगलेक्ट करेंगे, हम लेंगे x माइनस 2.5 into x minus 3 divided by 2 minus 2.5 and 2 minus 3 into this value. Okay, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में प्लस x minus 2 into x minus 3 divided by 2.5 minus 2, 2.5 minus 3 and so on. अच्छा, अब ये जो फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन है, लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि आपने ये मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कैसे करनी होती है। ओके, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगर 2 टर्म्स हैं तो आसानी से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर 3 हैं तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 4 फैक्टर्स हैं तो उसके लिए जो वीडियो मैंने की हुई है वो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो यू सी दैट ये आपके पास वही एक पहला फैक्टर आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएंगे, और तीसरा, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये पॉलिनॉमियल आ जाएगा, विच ऑब्वियसली वेरी हेल्पफुल जब आगे हम डेरिवेटिव्स वगैरह करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में आपको पहले ये पॉलिनॉमियल बनाना होता है, उसके बाद फिर आप इसके डेरिवेटिव और इसको इंटीग्रेट करते हैं, एंड देन यू विल सिंपली पुट x इक्वल 2.7 टू फाइंड log of 2.7. ओके, एंड दैट इज दिस वन which gives you error of 0.00086 and 46. Okay, the same thing can be done for this function as well. It's for y equal to sin x, so you should practice that yourself by using calculator, and you may do that manually, so I hope you will be able to do that. इसमें एक छोटा सा ट्रिक हम कर रहे होते हैं कि अगर फॉर सम गिवन डाटा आपके y की जो वैल्यू है वो 0 होगी, जैसे यहाँ पर 1 पीस की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यू कैन डू इट डायरेक्टली एज वेल, लेकिन जिस पॉइंट
जिस x पे y की वैल्यू 0 होती है तो हम कहते हैं कि x माइनस दैट पॉइंट विल बी द फैक्टर. So for this specific function y of x, you see for x equal to 1 the value is 0, it means x minus 1 is the factor of this function y of x. So if you have one factor, the next factor can be simply found, the remainder can be found. So we know that that product, that function इसको हम लिख सकते हैं is the factor multiplied by the quotient जो हमारे पास होगा. तो ये x माइनस वन के साथ जब r ऑफ x को मल्टीप्लाई करना है तो हमें y ऑफ x की बजाय अब सिर्फ r ऑफ x फाइंड करना है. तो r ऑफ x की वैल्यूज़ क्या होंगी? r ऑफ x की वैल्यूज होंगी y डिवाइड बाई x माइनस वन. तो अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y को माइनस 12 लेंगे, तो माइनस 12 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1, सो इट विल गिव प्लस 12. जब 1 के लिए तो हम लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अब तो 1 निकल गया है. हम 3 पुट करेंगे तो 3 के लिए इसकी वैल्यू 12 है. So 12 divided by 3 minus 1, that is 2, so we get 6 here. For 4, जब x की जगह हम 4 पुट करेंगे तो y की जगह 24 पुट करेंगे. अब हमने पॉलिनॉमियल फाइंड करना है किस चीज़ के लिए? r ऑफ x के लिए, और ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं. तो इसको हम लेग्रांज से कर सकते हैं. x माइनस 0 होगा, इसमें x माइनस 3 होगा, x माइनस 4 होगा अकॉर्डिंगली, जो हमने इससे पिछले वाले कर दिया. ठीक है, तो r ऑफ x के लिए जो हमारे पास पॉलिनॉमियल आ जाएगा वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 होगा. एंड देन द टोटल जो पॉलिनॉमियल आएगा उसके साथ वो जो फैक्टर पहले हमने फाइंड किया था x माइनस 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे ख्याल में इतना इशू नहीं होना चाहिए. जस्ट टू डिक्रीज द डिग्री, और फिर हम उसको आखिर में मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन वी गेट अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3. ओके, सो अब इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ विद मैटलैब. मैटलैब आपने कैसे करना है? सो मैटलैब में इट्स वेरी सिंपल, कोई इस पर मुश्किल चीज़ नहीं है. अगेन वी कॉल दिस Lagrange's underscore polynomial, and then we have x the input value, the arguments, y the entries, and a is the point at which we want to find the value of that polynomial. So जब भी हम समेशन की बात करते हैं मैटलैब में तो उसकी स्टार्ट हम क्या करते हैं? 0 से लेते हैं, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है तो वहाँ पे हम स्टार्ट जो है वो 1 से लेते हैं. ये आपको पता होना चाहिए, जनरली हम यही कर रहे होते हैं कि जब आप एडिशन करते हैं, टर्म्स को ऐड करते हैं, सीरीज़ फाइंड करते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग जो वैल्यू होती है वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं. और जो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है उससे 1 से हम कर रहे होते हैं, इनिशियलाइज उसको 1 के साथ करते हैं. तो हमें बेसिकली इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है बिकॉज फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और साथ में फिर उन टर्म्स को ऐड कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास वो सम आ जाएगा, और ये दो फैक्टर्स हम लेंगे, एक न्यूमरेटर में फैक्टर होता है और एक डिनोमिनेटर में फैक्टर्स की प्रोडक्ट होती है. तो इसलिए हमें एक b लेना है और एक हमने d लेना है. तो अब b को हम अपडेट करते जाएंगे बिकॉज इट्स सिंपली एक्स के माइनस एक्स जे. जब आई जे और के बराबर नहीं होंगे तो हमने उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, और जब जे और के बराबर होंगे तो फैक्टर ऑटोमेटिकली नहीं हम लेंगे. ठीक है, एंड द सेम थिंग फॉर डी के एज वेल. तो उसमें से डी के जो हमने 1 से लिया था उसके साथ ए माइनस एक्स जे को मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसमें अगेन वही चीज़ है कि जे और के बराबर नहीं होंगे. जब भी जे और के बराबर होंगे तो वो टर्म उसमें नहीं आएगा. वी नो दैट हर एक टर्म में फर्स्ट टर्म में एक्स नॉट नहीं है, दूसरे टर्म में फिर x1 नहीं है, तीसरे में फिर x2 नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर उसी के साथ हम क्या कर रहे होते हैं? उनको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं एंड सो ऑन. और फिर आखिर में जब ये प्रोडक्ट आ जाते हैं तो उनको हम सिंपली ऐड करते हैं. वो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं y के बाई बी के, ये हमारे पास आता है, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? वी विल बी सिंपली हैविंग p, जो कि इसमें बार बार वो टर्म्स ऐड कर रहे हैं. तो ये c के, ये y की वैल्यू है, और ये b के जो नीचे आएगा वो कोफिशिएंट है, और ये साथ में फिर d के ये वाला कोफिशिएंट है. तो वी हैव p इज इक्वल टू p प्लस c के मल्टीप्लाई बाई d के, राइट. एंड देन वी कैन सिंपली से इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर लो, जो p की वैल्यू है p वही आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाती है. सो I've done this example with it already, so let me do that for you again. Let me use CLC. X की वैल्यू हमें चाहिए होगी, so X की वैल्यू 300, 304, 305, 307 था, और Y की वैल्यू हमें चाहिए होंगे जो कि अभी हमने ली है 2.4771, 2.48 and 29 and so on. So इसको भी हमने इनपुट कर दिया. So we have value of X and Y. अब हमने इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करना है. इसमें C जो हमें दे रहा है वो कोफिशिएंट्स दे रहा है, जिन कोफिशिएंट्स को हमने फाइंड करना है. ओके, सो लेट मी जस्ट कॉपी इट देयर. और अब मैं A की वैल्यू दूंगा 301 बिकॉज हम 301 पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. जिन मेरा यहाँ पर C जो है वो आपको सिर्फ वो कोफिशिएंट्स डिटरमिन कर रहा है, वो फाइंड कर रहा है. ये जो हमारे पास यहाँ पे था कि C ऑफ K इज इक्वल टू, नीचे हमने फाइंड किया था ये 1 और B के इंटू वाई के, इसकी जो वैल्यू है इसको हम C के कहते हैं.
सो इतना ज़रूरी नहीं होता, हमारा मेन जो m है वो p के एरिया है, तो p अगर हम फाइंड करेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 2.4786, जो कि अभी हमने इसको प्रूव किया था कि इसकी वैल्यू यही होगी. सो थैंक यू वेरी मच and wish you good luck. See you next video.